Dear boys and girls, we are doing GRE. It means we are doing GRE. GRE means Graduate Record Examination. तो पहले हमने किया है सेंटेंस इक्विवेलेंस, अब हम करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन. टेक्स्ट कंप्लीशन. Those who are desirous to get admission in MBA and PhD program, they should try to work very hard on GRE test. Is that clear? तो चले आज फिर हम करते हैं GRE. ये है टेक्स्ट कंप्लीशन. पहले हमने किया सेंटेंस इक्विवेलेंस, नाउ वी आर डूइंग टेक्स्ट कंप्लीशन. मैं इसमें एक वर्ड होता है या एक क्लॉज होती है जो कि आपको आपके आंसर की तरफ ले जाती है. इन अदर वर्ड, इट इज़ अ क्लू वर्ड और ट्रिगर वर्ड विच टेक्स यू टूवर्ड्स योर आंसर. तो then definitely it becomes very easy and comfortable for you. That particularly, particularly the student of GRE and the other competitive student, they should try to have this thing. So, चले फिर हम करते हैं. With global interconnectedness on the rise, the conviction of the United States to remain, is that clear, neutral in World War First seemed ever more dash. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. We have 5 options. Is that clear? We have 5 options. तो इस सेवन में I would like to give you that the word we try to indicate you towards your answer, or it's a trigger word or clue word. Is that clear? अब ये जो clue word है, the word we try to communicate your answer is global interconnectedness on the rise. This is our indication towards our answer. This is our trigger word. If you stress on this word, you will find out your answer. Your answer become very easy. तो चले फिर हम करते हैं 5 ऑप्शन की तरफ जाते हैं. तो पहली ऑप्शन है प्रीजम्पचुअस. ये एडजेक्टिव है. इधर क्लियर, इट्स एन एडजेक्टिव. और यह इसका मतलब बोल्ड एंड इंसोलेंट. और दूसरा है फुटाइल. इधर क्लियर, फुटाइल मीन यूजलेस. और तीसरा है कंटेम्पचुअस, फुल विद हेट एंड कॉन्टेम्प्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. और अगला है प्रैग्मेटिक. इसको कहते हैं प्रैक्टिकल अफेयर एंड थिंग लाइक दैट. एडजेक्टिव है ये भी. Admirable is also adjective. So 5 option है. Now which should be your answer? And I have given you the clue word, the word which try to indicate your answer. It's a trigger word. It's a clue word. I would like to tell you the clue word. Global interconnectedness on the rise is our indication. It's a trigger word. ठीक है. The conviction of the United States to remain neutral in World War First seemed ever more futile. Futile is our answer. F-U-T-I-L, futile means useless. तो हमारा फिर आंसर बनेगा 2, यानी futile. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. अगला है हमारा नंबर 2. Is that clear?
नंबर 2 ये है हमारा GRE, वी आर डूइंग टैक्स कंपटीशन। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं, गौर से सुने। अपॉन विजिटिंग द मिडल ईस्ट इन 1850, Gustav Felbert was so dash ballet dancing that he wrote, in a letter to his mother, that the dancer alone made his trip worthwhile. अब इस the word which try to indicate you towards your answer, that is, dancer alone made his trip worthwhile, is our clue words, or trigger word. If you try to stress these lines, you will find your answer very easily. तो चले हम दोबारा करते हैं। Upon visiting the Middle East in 1850, Gustav Felbert was so enamored of, ठीक है, इसका मतलब है इन्फ्लुएंस विद लव, बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह जताना। और नंबर 2 है टेकन अबैक, परेशान होना, सरप्राइज, ये इज अ कंट्रास्टिंग वर्ड। बिसीज का मतलब है बेग अर्जेंटली, और या अननेसली भी आप कह सकते हो। फ्लस्टर्ड ये वर्ब है, स्टेट ऑफ एजिटेटेड कंफ्यूजन, अ थिंग लाइक दैट। तो हमारा फिर आंसर बनेगा बी। B is our answer. B should be our answer. I would like to repeat once again. Upon visiting the Middle East in 1850, Gustav Felbert was so enamored of ballet dancing that he wrote, in a letter to his mother, that the dance alone made his trip worthwhile. And its answer is enamored of. और अब हम अगला नेक्स्ट की तरफ आएंगे। अगला हमारा तीसरा है। इज दैट क्लियर? यह है द ह्यूमन रेस इज अ वेरी डैश स्पीसीज एज द फैकेड ऑफ काम दैट कवर्स our anxiety, and dash is flimsy and effortlessly reputed. Is that clear? So I would like to take your, that of interest. So I would like to tell you the trigger word which will help you to find out your answer. और ये है facade of calm. Is that clear? That covers our anxiety. Now let us find out its answer. ये double blank है and we should try to have a double space. So double blank and double, that of a box. तो चले हम फिर करते हैं। The human race is a very, is that clear? अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, फ्रेजाइल, पर्पसफुल और डेयरिंग। तो इसका आंसर फिर बनेगा, अगर आपने इसका क्लू वर्ड देखा है, ट्रिगर वर्ड देखा है, तो आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। यानी आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन द क्लू वर्ड, फैकेड ऑफ काम दैट कवर्स अवर एंग्जाइटी। नाउ आई वुड लाइक टू डू इट। The human race is a very fragile, weak, is that clear? Species. The human race is a very fragile species. As this facade of calm that covers our anxiety. And अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे, दूसरे ब्लैंक की तरफ आएंगे। पहला है टेरर। इसका मतलब इट्स अ रॉन्ग डायरेक्शन, वी आर मूविंग टूवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन इफ वी ट्राई टू प्लेस इट इनटू द ब्लैंक।
तो दूसरा है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी, अब आप देखेंगे इन द सेकंड ब्लैंक इट शुड बी समथिंग सिमिलर टू एंजाइटी। तो वल्नरेबल इज द बेस्ट फिट। वल्नरेबल इज अवर आंसर। वल्नरेबल कहते हैं भाई डिफेंसलेस। तो हमारा फिर आंसर बनेगा फ्रेजाइल ब्लैंक में पहला है और दूसरे ब्लैंक में है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मीन डिफेंसलेस। तो चले, शुड आई मूव फर्दर? नाउ द नेक्स्ट वन इज number 4. Number 4 we are doing. Now let us, first of all I would like to tell you the clue word, the trigger word which will help you to find out your answer. The practice of purchasing book was primarily a dash of the well-to-do unit, the late 1800s. When is very important word. When the increased popularity of dime novel, when the increased popularity of dime novel is our indication. It's a trigger word. It will help you to find out your answer. ठीक है? The expansion in the number of bookstores and the introduction of the paperback made books dash the average man. Dash the average man. Is that clear? तो चले फिर हम इसको करते हैं. I would like to repeat it and try to solve the answer. Trigger word हमने कर लिए हैं. It's very easy now to find that of the answer. The practice of purchasing books was primarily a, is that clear? Prerogative. It means special right. Is that clear? Prerogative is that of the first option. Then we move towards the second option of the well-to-do until the late 1800s, when the increased popularity of dime novel is our indication towards our answer, comma, the expansion in the number of bookstores and the introduction of the paperback made books dash the average man. Dash the average man. अब हम ये हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ब्लैंक है, इसमें तीसरा जो है अटेनेबल बाई. अटेनेबल का मतलब होता है एक्सेसिबल. तो आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन, द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बुक्स वाज प्राइमरीली ए प्रेरोगेटिव of the well-to-do until the late 18, when the increased popularity of dime novels, the expansion in the number of bookstores and the introduction of the paperback made books attainable, accessible, the average man. तो ब्लैंक जो सेकंड है उसका तीसरा है अटेनेबल, विच मीन accessible. और अब हम अगला करेंगे नंबर 5. इज दैट क्लियर? नंबर 5 हम करेंगे. ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये सबसे इजी होता है. जो लेंथी है वो सबसे इजी है. तो चले फिर हम करते हैं इसको. यह है इंक्रीजिंगली द बाउंड्रीज ऑफ कांग्रेशनल सीट्स are drawn in order to protect incumbents. Incumbent means holder of an office is our indication towards our answer. It's a clue word which will help you to find out your answer. Incumbent. If you try to start this word incumbent, you will find out your answer. As legislator, engineer, the demographics
of each district such that those already in office can cost 2. Is that clear? Can cost 2. अब आप गौर से देखें, गौर करें इसको, तो इसका आंसर बनेगा एन ineluctable, which mean not to be avoided, और इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं इनएविटेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके. इज दैट क्लियर? तो चले हम फिर आगे चलते हैं. Victory, of course, there is always the possibility that the incumbent will face a challenge from within his or her own party. Nevertheless is one of the most important words. Nevertheless is trying to change the direction. The very function of that of this nevertheless is that it moves us from one idea to another idea, or in other words we can say a change of order. Is that clear? Change of direction. Is that clear? तो चले फिर हम करते हैं. Of course there is always the possibility that the incumbent will face a challenge from within his or her own party. Nevertheless is used for change of direction. Once the primary is over, the general election is merely denouement. ये कहते हैं final outcome of the I would like to repeat it, the final outcome of the dramatic complication in a literary work. Is that clear? तो हमारा फिर आंसर बनेगा ब्लैंक बी में. ब्लैंक जो बी है इसमें तीसरा है merely denouement फाइनल आउटकम. इज दैट क्लियर? तो हमारा फिर आंसर था ब्लैंक 2 में तीसरा, और ब्लैंक ए में हमारा ए है इनएलक्टेबल. सो आज हम इतने करेंगे, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट करेंगे. अभी हम GRE कर रहे हैं. GRE के बाद हमारी सोच है हम GMAT करेंगे, उसके बाद SAT, MA इंग्लिश और BA वगैरह वगैरह करेंगे. ठीक है, तो चलें फिर आज इतना ही काफ़ी है.